Completing its 50 years, Kharghar located Bharati Vidyapeeth's Electronics Department organized a robotic fest called Sixth Sense RoboGalaxy 2013. More than 300 engineering students from Navi Mumbai, Mumbai and Thane participated for this fest and showed their innovation and creation. The students also got the opportunity to learn about Sixth Sense robot and the making of these robots through workshops and seminars. The last day of the event saw the presentation by the students in which they displayed the robots made by them. The winners of the best robot were Makran Sathe and Ankit Patil of Dombivli's Zondhale College of Engineering. The winners will get a chance to participate in the fest to be organized at Bangalore's Indian Institute of Science. The students shared about their robotic creations. TMF circuit, which has to be joined and it starts to be joined with the wires. We have programmed it in such a way that when we use the keypad, when we press the buttons, the wheels would be integrated on that side, which will move on. Supposingly, we have pressed 2, it will rotate in forward direction, and if we 8, then it backward direction, and if we 6, turn right, and 4 for left. Such a way we have designed this DC motor, and which is being used using this mobile. It can work on its own, means it can find its own path. If a black line is drawn on the table, then it will follow, this robot will follow by its own self. It will follow the black line. If it is curved also, it will go curved by its, and when it will come to the edge, it will not fall. That's the specialty of this robot. The event coordinator and professor of the college, Anand Sutar, gave more information. Basically, मकसद इसका ये है कि हम भारतीय विद्यापीठ का गोल्डन जुबली मना रहे हैं अभी, वो एक ओकेजन हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए सोच रहे थे, इसलिए हम लोग एक मेगा इवेंट करना चाहते थे कॉलेज में। तो इसमें हमारे डायरेक्टर सर विलासराव कदम सर का सपोर्ट रहा, प्रिंसिपल सर का सपोर्ट रहा, और इस तरह से हम लोगों ने पूरे मुंबई और नवी मुंबई में एक एडवर्टाइजमेंट किया, तो हम लोग को एकदम ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला इस बात का। यहाँ पे 300 बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के आए, जो मुंबई के हैं, नवी मुंबई के हैं और हमारे भारती के भी हैं बच्चे। विद गीता गुप्ता, गंगा सिंह राजपुरोहित फॉर NMTV न्यूज़। आपली 50 वर्ष पूर्ण करत खारघर येथील भारती विद्यापीठच्या इलेक्ट्रॉनिक विभागाद्वारे रोबोटिक फेस्ट आयोजन करण्यात आलं होतं, ज्याचं नाव होतं सिक्स सेन्स रोबो गॅलेक्सी 2013। या कार्यक्रमात नवी मुंबई, मुंबई आणि ठाणेमधून जवळपास 300 अभियंता विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता, ज्यामध्ये त्यांनी आपल्या आविष्काराचं प्रदर्शन केलं। या दरम्यान मुलांना रोबोटच्या सिक्स सेन्सची माहिती घेण्याचीही संधी मिळाली, त्याचप्रमाणे रोबोट बनवण्याची पद्धतही त्यांना कळाली।
कार्यक्रमाच्या शेवटच्या दिवशी विद्यार्थ्यांनी बनवलेले रोबोट प्रदर्शित करण्यात आले। बेस्ट रोबोटचे पारितोषिक मकरंद साठे आणि अंकित पाटील यांना देण्यात आले, जे डोंबिवलीच्या जोंधळे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी आहेत। या विजेत्यांना बेंगलोर मधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या फेस्ट मध्ये सहभाग घेता येणार आहे। विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या रोबोटिक आविष्काराची अधिक माहिती दिली। TTMF circuit, which has to be joint program, and it starts to be joined with the wires. We have programmed it in such a way that when we use the keypad, when we press the buttons, the wheels would be integrated on that side, which will move on. Supposingly, we have pressed 2, it will rotate in forward direction, and if 8, then it backward direction, and if 6, turn right, and 4 for left. Such a way we have designed this DC motor, and which is being used using this mobile. It can work on its own, means it can find its own path. If a black line is drawn on the table, then it will follow, this robot will follow by its own self. It will follow the black line. If it is curved also, it will go curved by its, and when it will come to the edge, it will not fall. That's the specialty of this robot. आयोजक आनंद सुतार यांनी याचीच अधिक माहिती दिली। बेसिकली मकसद इसका ये है कि हम भारतीय विद्यापीठ का गोल्डन जुबली मना रहे हैं अभी, वो एक ओकेजन हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए सोच रहे थे, इसलिए हम लोग एक मेगा इवेंट करना चाहते थे कॉलेज में। तो इसमें हमारे डायरेक्टर सर विलासराव कदम सर का सपोर्ट रहा, प्रिंसिपल सर का सपोर्ट रहा, और इस तरह से हम लोगों ने पूरे मुंबई और नवी मुंबई में एक एडवर्टाइजमेंट किया, तो हम लोग को एकदम ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला इस बात का। यहाँ पे 300 बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के आए, जो मुंबई के हैं, नवी मुंबई के हैं, और हमारे भारती के भी हैं बच्चे। गीता गुप्तासह गंगा सिंग राजपुरोहितचं वृत्त।